Okay, today we can go to the last portion of formation of landforms. In एक्सोजेनिक फोर्स में जो पहले हम लोग कवर किया है, फ्लूवियल का कवर किया है, एओलियन का कवर किया है और ग्लेशियल का कवर किया है. तो आज we can go to the last two topic. One is coastal landforms and the last one is karst landforms, that is based on underground water. So coastal landforms, what is this? Coast means coastal zone is defined as the transition zone where the land meets water. Actually, land meets ocean or sea. जो सी एंड मेनलैंड, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, ये दोनों के बीच में जो पोर्शन आता है, दैट इज एन एरिया मोस्टली मेड बाय डिपोजिशंस. वो डिपोजिशन से एक तो ट्रांजिशन जोन है, उसी एरिया को वी विल यूजुअली से इट एज कोस्टल जोन. एंड कोस्टल लैंडफॉर्म्स आर द लैंडफॉर्म्स अलोंग द कोस्टल लाइन. ये जो कोस्टल एरिया है उस जगह पे जो देखता है लैंडफॉर्म्स, उस लैंडफॉर्म को वी विल यूजुअली से इट एज कोस्टल लैंडफॉर्म्स. एंड जस्ट लाइक every agents of gradation, here also the coastal area may be we have erosional activity as well as the depositional activity. But उसी टाइम में फ्लूवियल में वाटर था, ग्लेशियल में आइस शीट था, एंड इन एओलियन में विंड था मोस्ट प्रोमिनेंट एजेंट. इन द कोस्टल एरिया here also it is water, but water from oceanic side. ओशियन से और सी से जो पानी आता है in different forms like waves, currents, tides, ये सब it will create landform at the coastal zone. So that area we will say it as coastal landforms. And along with the coastal fluvial action, or some part we can say it as small amount of wind action also. The another major factor that influencing the coastal landform here is the climatic factor. The temperature, the rainfall, the wind actions created by the climatic change, ये सब भी influencing factor है. So what are the major? So just like fluvial action, here also the fluvial process includes corrosion, that is the solution soluble करके dissolve करके लेके जाता है ना, Y force. Then hydraulic action, that is the mechanical power of the water itself. Then the abrasion, that is the water uses some tool, mechanical tool, like जो small sediments वो carry करता है, like sands, soils, small pebbles, that will erode, that will cause erosion. And the final one is attrition, that is the interaction between two मैकेनिकल टूल्स. तो जो टूल्स है वो खुद से अपना इंटरेक्ट करके उसका तो इरोशन हो जाएगा. सो दीज आर द मेजर factors which influence the coastal, which creates the coastal landform. One is corrosion, then hydraulic action, abrasion and attrition, same like the fluvial processes. So here I said the factors, the water तो ऐसा नहीं है, not just like that is in the fluvial action. Here water का अपना तरीका है, water का अलग movements है. So what are the major movements here? Mainly waves, then currents and the tides. So we can go through these its definitions. It is it's उतना relevant नहीं है as we are studying about the formation of landforms, but still you just understand what are these movements, dynamics. So waves is a water surface wave that occurs on the free surface of body of water and are created by the friction between wind and the water surface. तो ऐसा movement जो सी के अंदर जो वेव जैसा मूवमेंट होता है
that is actually sea waves, surface waves बोलता है इसे. So when it reaches this sea coastal area, it will move like this and enters. And here it will erode. If as this portion से ये जो portion है, the waves will act at this points. Then longshore waves are, another one is longshore currents, and are created when waves are refracted while entering into the shallow water. ऐसा है. तो वेव्स यहाँ तो कोस्टल एरिया है, तो यहाँ से ऐसा जाएगा, इधर आने से वेव ऐसा ऐसा मूवमेंट करके कोस्टल एरिया में आएगा, एंड यहाँ से टर्न करके एक कोस्टल में ऐसे जाएगा. सो दीज आर लॉन्ग शोर करंट्स. ऐसा होकर ऐसे उल्टा होके शोर के इसी तरह से उल्टा वापस आएगा. सो दीज आर लॉन्ग शोर करंट्स. एंड अनदर वन इज टाइड्स. Tides are rise and fall of sea level. ये तो कैसे होगा? It is because of the gravitational force, gravitational attraction of moon and sun. ये तो पानी यहाँ सी का जो पानी है ऐसा है, तो because of gravitational attraction इसका तो level rise होगा, ऐसा ऊपर ये तो खुद से आ जाएगा. So that is called tides. Tides are the rise and fall of sea level caused by the combined effect of gravitational forces exerted by moon, the sun, and along with that the rotation of the earth. And another small dynamics is that drip waves is a strong, localized and narrow current of water which moves directly away from the shore, cutting through the lines of breaking waves like river running out of a sea. ऐसा है. To show you here. अभी ये waves तो ऐसे जाएगा डायरेक्ट. अभी ये तो कोस्टल एरिया है. Usually the waves will move like this. तो यहाँ पे क्या होगा? This rip waves are waves which directly comes back. यहाँ अपना से इधर जाके यहाँ तो थोड़ा एलिवेटेड एरिया होगा, यहाँ से थोड़ा एलिवेटेड एरिया होगा, ऊपर जा रहा होगा, तो यहाँ हीट होके ये पानी वापस ऐसे डायरेक्ट वापस आ जाएगा. नॉट लाइक ऐसा वाला मूवमेंट नहीं है, लॉन्ग शोर करंट जैसा नहीं है. दिस विल डायरेक्टली कम बैक. तो यहाँ ये जो आगे चलता है चाहता है ना, ये करंट वेव्स को ये ब्रेक करके ये तो उल्टा आ जाएगा. तो इस जगह पे वेव मूवमेंट ऐसा नहीं होगा, तो उल्टा इसी डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द शोर होगा. So these are the major dynamics that result in the coastal landforms. Along with that, as I said, there is climatic factors like for weathering we need the temperature, precipitation, ये सब चीज भी इसको तो influence करेगा. So landforms produced by waves. This is the point we want to understand. First one is erosional landforms. What are the erosional landforms? By sea waves, that is sea cliffs, wave cut platforms, not landform, landform also, we usually use it, wave cut platforms, then caves, then sea arcs, stacks and stumps, then bays, barrier islands and lagoons. Usually when you see sea cliff, वेव कट प्लेटफॉर्म, केव्स, ये सब ये पांचों एक ही तरह का है, इरोशन है. तो एक डेवलप होके दूसरा बन जाएगा, दूसरा डेवलप होके तीसरा बन जाएगा, ऐसा मोशन है. सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स. सी क्लिफ, वेव कट प्लेटफॉर्म्स, केव्स, सी आर्क्स, स्टैक्स एंड स्टम्प्स. देन कम्स द बीच. बीच को तो ऐसा उधर formations है. One is bay, दूसरा है barrier islands, and the third one is lagoons. And in depositional features, it is beaches. Every coastal regions we know that if the rock is not hard, there will be beaches. Then the dunes, then the coastal bars, then spits and tombolo. ये tombolo and spit is almost same characteristic. That I will say you how it varies, it differs.
Now we can see each of these. First one is C cliff. अभी आप देखते हैं से cliff हमको पता है it's vertical. There is vertical slope for a, if there is a vertical slope for a land, that area we will say it as cliff. So what is sea cliff? Sea cliffs are steep faces of rock and soil that are formed by destructive waves. अभी ये तो पहले ऐसा था, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक था, ये सॉफ्ट रॉक को इरोड करके जहां पे हार्ड रॉक है उधर तक इरोड करके इसको तो स्ट्रेट बना देगा. एंड as these are hard rock, the erosion will also be very slow. That's why it looks like a vertical wall. Vertical wall जैसा इसका appearance है. So that is called sea cliff. The sea eroding a cliff. ऐसा डायरेक्ट, इसका तो रिट्रीट भी ऐसा होगा, पैरेलल रिट्रीट होगा, ऐसे ऐसे. कभी भी ऐसे नहीं होगा. If there is soft rock, then there will be. Otherwise, the retreat will be like this. नीचे अंडर कट करेगा, ऐसा कट करेगा, फिर ये तो कोलाइड होकर यहाँ गिरेगा, फिर स्ट्रेट होगा, फिर अंडर कट होगा, फिर ये तो दूसरा कट होके नीचे, ये तो नीचे गिर जाएगा. And this develops to caves, arcs, ये सब इसमें से ही you can see that. We can see the second one is wave cut landforms or wave cut platforms. Wave cut platforms. तो ये क्या है? Wave cut platform is a wide, gently sloping surface found at the foot of cliff. अभी ये तो these are cliff, straight है. तो क्या होगा? Waves motion mostly it is occurring here. तो ये जो portion है, most of these portion will be eroded and the remaining soft portion इसका तो एक तो जैसा प्लेटफॉर्म जैसा एक तो बन जाएगा, हार्ड रॉक का एक तो प्लेटफॉर्म जैसा बन जाएगा. सो दीज आर कॉल्ड वेव कट प्लेटफॉर्म. ये प्लेटफॉर्म कौन बनाया है? वेव. इसलिए तो वी विल कॉल इट एज वेव कट प्लेटफॉर्म और वेव कट लैंडफॉर्म्स इसे बोलेगा. जस्ट लाइक अभी नीचे का है, ये जो पोर्शन है इरोड करके जा रहे हैं, तो ऐसा एक तो प्लेटफॉर्म बन जाएगा, उसमें सी यहाँ तक आएगा, सी वेव्स तो यहाँ तक आएगा एंड रिट्रीट करेगा, तो यहाँ एक तो हार्ड ऐसा प्लेटफॉर्म है. दैट काइंड ऑफ फीचर वी विल से इट एज वेव कट प्लेटफॉर्म्स एंड इट ऑकर्स वेयर द वेव मोशन इज वेरी हाई. ये भी याद रखना है, वेयर द वेव मोशन इज वेरी हाई, only in that portion we can see these cliffs. And at the coastal area, there should be the presence of hard rock. Hard rock का presence भी इस जगह पे जरूरी है. Then only we can see cliffs and wave cut platforms. Then comes the sea caves. Caves are formed in a cliff by wave action of an ocean or sea. ऐसा है, पहले तो ऐसा था. ये पूरा एक क्लिफ था ऐसा पूरा, लेकिन क्या हुआ है? बिकॉज ऑफ दिस वेव एक्शन इसने तो यहाँ एक कर्व बना दिया है, ऐसा ऐसा कर्व बना के इसके अंदर केव बना दिया. लुक हियर यू कैन सी, यहाँ केव बना दिया है, तो देखने में इट विल लुक्स लाइक ए केव. ऐसा क्लिफ था. क्लिफ इसका तो नीचे पहले क्या बनाएगा? वेव कट प्लेटफॉर्म बनाएगा, उसके बाद इट विल क्रिएट मेकिंग केव्स. वो इसमें से जहां पे वेव एक्शन ज्यादा है एंड द रॉक इज सॉफ्ट, इट विल इरोड दैट रॉक एंड इट विल क्रिएट ए केव इन द सी. सो दैट एरिया वी विल से इट एज सी केव्स. एंड नेक्स्ट वन इज सी आर्क्स. Powerful waves spawned into rock from both sides of the headland. तो ये क्या है? The wave eroded rock at sea level from sea caves on either side. This you have to remember. अभी ऐसा था, ऐसे एक तो लैंड था, इसमें यहाँ से वेव एक्शन हो रहा है, तो यहाँ एक तो केव बना दिया है, केव का एक्सटेंशन ऐसे हो गया, तो यहाँ से भी ये वेव का एक्शन हो गया है एंड इट हैज स्टार्टेड मेकिंग केव हियर आल्सो. सो देयर इज ए कनेक्टिविटी हियर.
So this will form an arc. ऐसे एक तो arc बन जाएगा. So when there was a cliff first, cliff has been converted to caves. Caves अभी दोनों साइड से वो erode करना शुरू किया है, and when they meet each other, it will appear in the form of an arc. So this area we will say it as C arc. You can see here there was cave, there was wave cut platform है नीचे यहाँ, and here you can see वो दोनों साइड से erode करके इस जगह को लेके गया है, and this is called a C arc. C arc. A arc. Arc means ऐसा shape को we will say is arc. And the next one is stack and stumps. Stack and stumps. When the arc, ये तो arc हो गया, तो arc का क्या हुआ? That has been collapsed. वो तो collapse हो गया, वो तो destroy कर दिया, वो ऊपर का जो area destroy करे, it leaves a headland on one side and a stack, a tall column of rock on the other side. ऐसा था यहाँ पहले, ऐसा एक तो कर्व था, ऐसा एक कर्व था, इसका तो क्या हुआ, ये तो निकाल दिया वो ऊपर, वो कोलाइड करके नीचे गिर गया, तो देयर वाज ए रिमेनिंग, ऐसे एक तो रिमेनिंग बन गया है वो आर्क का. सो दैट इज कॉल्ड ए स्टैक. तो लेटर तो ये स्टैक बन गया, तब भी वेव अपना काम कंटिन्यू करेगा. तो फिर भी दूसरा एक तो है, ये क्या करेगा, द वेव अगेन स्टार्ट अटैकिंग दिस स्टैक, ये स्टैक को फिर अटैक करना शुरू करेगा, एंड इट विल वीकन द स्ट्रक्चर एंड इट विल फाइनली बिकम ऐसा छोटा वाला एक तो पोर्शन बन जाएगा, एंड दीज आर कॉल्ड स्टम्प्स. ऐसे क्रिकेट में हम सुना होगा स्टंप, जस्ट लाइक ए स्मॉल वर्टिकल कॉलम, दैट इज एक्चुअली वी विल से इट अ स्टंप. तो ऐसा इसका तो ऊपर का वो भी इरोड करके एक तो छोटा सा पोर्शन बन गया है, तो दैट इज कॉल्ड स्टम्प्स. सो व्हाट आर द लैंडफॉर्म्स? फर्स्ट लैंडफॉर्म ऐसे एक तो स्ट्रेट क्लिफ था, ऐसा एक तो डायरेक्ट क्लिफ था, उसको तो इरोड करके नीचे का एक लाइन बना है, एंड साथ में यू कैन सी इट हैज स्टार्टेड इरोडिंग, अंदर से इरोड करना शुरू किया, तो इट हैज मेड ए केव फर्स्ट. द केव हैज बीन कन्वर्टेड टू आर्क, एंड आर्क का तो इस पोर्शन को इरोड करके इट हैज क्रिएटेड टू स्टैक, एंड व्हाट हैपेंड लेटर, द स्टैक हैज बीन कन्वर्टेड टू स्टंप. So these are the major erosion features of a wave or a coastal landform. And the last one is bays, barrier islands, and lagoon. We can compare this. That's why I have given it together. A bay is a body of water, particularly surrounding by three sides. By land, land से three side में land. अभी Bay of Bengal क्या है? क्योंकि इस साइड पे इंडिया है, इस साइड पे म्यांमार, ये है ना इंडोनेशिया, ये सब ऐसा है. तो यहाँ बे ऑफ बंगाल सी इंडिया का ऐसा एरिया में पूरा, तो इट इज सराउंडेड बाय लैंड, इन थ्री साइड में लैंड है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल. बंगाल का बे है दिस. हमारा एक तो सी है बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, लाइक दैट. यू कैन सी देयर द लैंड, द water bodies surrounded by land in three sides, like that. This way you can see it is surrounded by, so this water body we will usually say it as bay. तो इसके बाद क्या होगा, barrier islands. Second one, islands are flat and lumpy areas of sand formed by waves and tidal action parallel to mainland. These are actually barrier island है. इसका तो पूरा एक तो लैंड था, इसका तो इरोड का ये यहाँ एक तो अच्छा सा हार्ड रॉक था, नहीं है तो बाद में कुछ लेगून्स का ये
कोरल का डिपोजिशन हो चुका होगा तो ऐसा एक तो कोस्टल कंटिन्यूटी एक तो लैंड बन चुका होगा, जस्ट लाइक ए बैरियर। अभी ऐसा एक तो बैरियर बनेगा, यहाँ से वेव्स को उतना ज्यादा अंदर नहीं घुस पाएगा, तो इसको साइड से ऐसा जस्ट लाइक ए बैरियर बन जाएगा. So that area we will say it as barrier islands. If you look here, these are all barrier islands. ऐसा mostly it is prepared by, made by, created by coral reefs. Coral reefs ने ये तो maximum ये तो coral reefs ही बनाता है, नहीं ये तो क्या होगा, वेव एक्शन से ये जो पहले लैंड था उसको तो इरोड करके थोड़ा ये तो पानी अंदर घुसेगा. So that is called actually barrier islands. एंड जो पानी इसके अंदर है, ये जो पोर्शन है, दैट वी विल से इट एज लेगून्स. ये जो पानी वो बैरियर आइलैंड के अंदर का पोर्शन में जो पानी है, वो पानी वी विल से इट एज लेगून्स. सो व्हाट इज अ लेगून? A lagoon is a shallow body of water protected from a large body of water, usually in the ocean, by sandbar, barrier islands or coral reefs. So ये अंदर का जो एरिया है, इसे we will say it as barrier, lagoons. जो पानी को जो बाहर का जो बैरियर करके जो लैंडफॉर्म है, that we will say it as barrier island. And अभी एक लैंड को तीन साइड से अभी कवर करके लैंड है, एक वाटर बॉडी को तीन साइड से कवर करके अभी ये लैंड फॉर्म्स है, लैंड है, तो वी विल से इट एज ए बे. सो दीज आर द मेजर इरोशनल लैंडफॉर्म्स इन द कोस्टल एरियाज. व्हाट आर दे? इजली वी कैन रिमेंबर. वन इज क्लिफ. क्लिफ के बाद में वेव कट प्लेटफॉर्म. Then it has been converted to caves. Caves again converted to arcs. Arcs again converted to stacks. Stacks again converted to stumps. So इतना एक तो हो गया. दूसरा है bay, barrier island and lagoons. Barrier island sometimes it will be a deposition landform as well. So directly we can't say it is a. Usually it is considered erosional landforms, but usually we can also say it is a deposited landform. Sometimes the coral reefs will create a barrier islands. Now we can see what are the depositional landforms of waves or the coastal at the coastal area. Depositional landforms. First one, as everyone knows, it is beach. A beach is a narrow strip of land separating a body of water from inland areas. ये वाटर बॉडी है, तो इसको सब दिस इज द लैंड एरिया, एंड इस एरिया को डिवाइड करने, ये तो डिपोजिशन है, सैंड का डिपोजिशन. सी ने डिपोजिट किया है सैंड को इधर, एंड इट हैज क्रिएटेड ए न्यू लैंडफॉर्म दैट इज कॉल्ड बीच. दैट इज कॉल्ड बीच. And the second one is coastal dunes. So what is coastal dunes? अभी dunes ऐसा मिट्टी डाल के एक तो unconsolidated, एक तो ridge नहीं है तो एक small hill जैसा formation हो जाएगा. That you can see in desert region also. Those are solid unconsolidated material deposit करके एक तो ऐसा माउंट जैसा बन जाएगा. then that we will say it as dunes. In the coastal area also you can see the same feature, that we will usually say it as coastal dunes. So what are these coastal dunes? Coastal dunes are a ridge or a series of ridges that are formed at the rear of a beach. Beach जो हम बोल दिया, this is the beach area. इसके पीछे जो ऐसा ऊपर वाला जगह है, that we will say it as dunes, and it differ from most other constructional coastal landform in they are formed by the movement of air. This is an actually, as yesterday also I said, because of the wind action, not only in desert region we can see the dunes, it can be seen in the coastal areas. So here also there is coastal dunes, which is mostly made by this wind action.
So that is a difference of dune. It is created by aeolian action in coastal area. So these are dunes. So it's a ridge-like or a mound-like formation or small hill-like formation made of unconsolidated material. Then the third one is bars. बार तो ऐसा है, अभी आप अभी हम बोला है ना बैरियर रीफ के, बैरियर आइलैंड्स के बारे में, बैरियर रीफ और बैरियर आइलैंड्स, तो बैरियर आइलैंड्स के बारे में अभी बोला है ना. जस्ट लाइक दैट a bar is created when there is a gap in the coastal land within the water body. ऐसा है, एक तो मेन लैंड होगा, वो मेन लैंड को कनेक्ट करके ऐसा एक तो बार जैसा, जस्ट लाइक ए बार देयर विल बी एक कोस्टल डिपोजिशन, मिट्टी का और सैंड का एक तो डिपोजिशन होगा ऐसा इस एरिया पे. तो क्या होगा, यहाँ से पानी अंदर घुसेगा, एक साइड से ऐसा घुसेगा. सो दैट इज कॉल्ड ए बार. जस्ट लाइक ए बार है ना, आयरन रोड जैसा है ना, ऐसा स्टील, ऐसा बार बन जाएगा. ए बार इज क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ गैप इन द कोस्टल लैंड. ये तो कोस्ट, अभी इसमें देखो, दिस इज द कोस्टल लैंड एंड दिस इज द बार. So various name has been given to with these bars like Spit, Tombolo, Sub. Yes, Sub. Actually, even the barrier islands, sometimes we can say it as bar itself, but उसका तो shape नहीं है, तो उसका तो position, इसका तो structure अलग है. That is why we are giving it a different names. So all these are actually bars, sand deposit at the coastal area, and इसके बीच में तो ऐसा, इस एरिया को यूजुअली वी विल से इट एज लेगून्स है. लैंड ये दोनों के बीच में जो आता है इसे वी विल से इट एज लेगून्स. एंड द स्पिट another one is spit. A spit is an extended stretch of beach material that projects out to sea and is joined to mainland at one end. Same like a bar. A bar जैसा ही है. If you look here, ऐसा जब हम लोग है ना कुछ पी के स्पिट करता है ना, तो स्पिट करते समय जैसे पानी बाहर जाता है ना, this landform is also like the same. ऐसे यहाँ से it's look like land is extending towards the sea area, just like a spit. This area actually is a bay. यहाँ जो राउंड है तीनों साइड में आप देखने से लैंडफॉर्म है. सो दिस इज एक्चुअली a bay and spit is just like this. ये तो ऐसा एक्सटेंशन है. A spit is an extended stretch of beach material that projects out to sea and is joined to the mainland at one end. ये तो mainland में one end connected है, दूसरा कुछ नहीं है. ऐसा एक तो बार, सैंड बार जैसा, जैसे बे है ना, बे तो ऐसा होगा extended, but here spit is just like this, half of this bay, ऐसा पूरा नहीं होगा. That is called a spit. And अभी tombolo, अभी spit का last end में if you look you can see an island here. तो mainland से ये spit connect करेगा दूसरा एक तो island. Then we will say this entire area we will say it as a tombolo. A spit is formed when a spit connects the mainland coast to an island. ऐसा एक तो island को connect करेगा, then we will say it as tombolo. So now you can understand that all these are deposition features, mainly the bay, the barrier islands, spit or the tombolo, almost the same, but slight difference है. bay तो ऐसा है पूरा extend करके एक साइड से दूसरे साइड में कनेक्ट करके बे जाएगा. उसके बाद सॉरी बे नहीं, ये बैरियर क्या बोलेगा, स्पिट सॉरी स्पिट नहीं, बास तो ऐसा है एक साइड से दूसरे साइड से ऐसा कनेक्ट करके आएगा. दूसरा स्पिट है तो आधा दूर जाएगा. तीसरा है स्पिट के लास्ट एंड में इट विल कनेक्ट है island, then we will say it as tombolo. So these are the major deposition landforms by these currents and the tides formed by, and only one feature is created by aeolian or wind action, that is coastal dunes.
ये that may also अभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, the coastal landform which is created by wind action. So you can write it as coastal dunes. So next one is karst topography or karst region which is created by groundwater, mainly groundwater, नहीं तो underground water जो बनाता है, जो features को बनाता है, that we will say it as karst topography. So groundwater is the water found underground, the cracks, spaces in soil, sands and rocks. अभी aquifer आप सुना होगा, जो सरफेस है, सरफेस के नीचे मिट्टी में पानी होगा, नहीं ये तो उसके अंदर पत्थर है, क्रैक्स है, ये सब जगहों पे you can see water, and that water we will usually say it as groundwater. Surface water and groundwater जो धरती के नीचे, सरफेस के नीचे है, that we will say it as groundwater. It can be seen in different format, different materials like soil में होगा, sand में होगा, नीचे का rocks के ऊपर होगा, नहीं ये तो जो cracks है उधर होगा, इस सब जगह में you can see this water. And what is karst topography? And karst topography is the formation of landforms due to the solution and deposition of any, you have to remember this, limestone area होगा और dolomitic region, दोनों सेम है almost. Dolomite होगा, नहीं ये तो limestone होगा, दोनों soluble है पानी में. That's why there the water will create a new landform, that is karst topography. Here the dominant ऐसा हार्ड रॉक होने से ऐसा कभी भी कास्ट टोपोग्राफी नहीं हो जाएगा. There should be the presence of huge limestone or dolomite होनी चाहिए, then only we can create karst topography. The groundwater can create karst topography, क्योंकि limestone and dolomite इसमें तो lime का presence है, that is easily soluble in water, dissolve हो जाएगा पानी में. So that area को erode करके it will create a new landform, that is karst topography. So let's see what are the major forms of erosional landforms and the depositional landforms by the ground or underground water. One is lapis, then sinkhole, shallow hole, uvallas, ponores, and the caves. Here also you can see caves. Same, almost सब चीज same है इसमें, थोड़ा changes है, ज्यादा कुछ change है. All these sinkholes, shallow holes, uvallas, वो ऐसा है, एक बड़ा होने से दूसरा बन जाएगा, दूसरा बड़ा होने से तीसरा बन जाएगा. It's almost the same. So all these are erosional landform, and for depositional landform we can mainly, you want to understand stalactites, stalagmites, and the calcium pillars. Actually these are pillars. Pillars means ऐसा pillar है ना जो जैसे, so pillars. So these are the major depositional landforms by the karst topography. Let's see each of these in detail. First one is lapis. The ridge formed due to distinctive solution activity along parallel to subparallel joints है. ऐसा एक तो landform था. If you look, you can see a continuous landform. And इसको तो क्या हो गया, जहां पे limestone था उसमें डिसोल्व करके ऐसा कॉलम जैसा ये तो बना दिया. पैरेलल इसका तो डिविजन यू कैन सी, ऐसा ये तो इरोड करके गया है पूरा. तो यू कैन सी डिफरेंट पैरेलल्स, यहाँ भी उल्टा भी पैरेलल्स है. So that we will say it as lapis. This kind of landforms we will say it as lapis. So ये रिज है, रिज सिस्टम है, तो इसका तो क्या लुक है, it will look like a parallel of, there will be lot of parallel to sub parallel joints होगा इसमें, ऐसा इसमें क्रैक है वो, तो that kind of landform you can see it as lapis.
Then the sinkholes. A sinkhole is a depression in the ground that is caused by limestone or chalk region in the form of erosion. इधर भी erosion है, तो क्या होगा? थोड़ा सा छोटा सा depression you can see here. ऐसा छोटा सा depression in the landform. ऐसे इधर देखो, these are कारस्टोपिक्रोम की. यहाँ ये लाइमस्टोन रीजन था, इसको तो इरोड कर दिया है, तो इसका इधर छोटा छोटा ऐसा होल्स होगा. सो दैट काइंड ऑफ होल्स वी विल से इट एज सिंक होल. सिंपली सिंक होल बनेगा. छोटा छोटा डिप्रेशन जैसे देखेगा, ऊपर से देखने से छोटा सा डिप्रेशन देख सकता है, होल्स देख सकता है. दैट होल्स वी विल से इट एज सिंक होल. Then that has been converted to shallow holes, a depression in the ground surface, especially where the surface stream disappears in the underground. ये ऐसा है. ये तो सिंक होल बोल दिया ना, वो सिंक होल और ज्यादा बड़ा हो गया है. तो यहाँ जो पानी आता है, इट विल गो टू अंडरग्राउंड, यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि इट हैज कनेक्टिविटी, नीचे से कनेक्टिविटी, तो बड़ा हो गया. वो होल पहले सिंक होल था, वो तो बड़ा होके that has been converted to shallow hole. When a number of shallow hole collects and a large hollow is formed. ये जो shallow hole है, वो बड़ा होने से, इसका साइज बड़ा होने से we will say it as dolines. We will say it as एक छोटा सा होल था, that is we will say it as sink holes. वो थोड़ा और बड़ा हो गया है, अभी इसे हम बोलेगा शैलो होल्स, वेयर ऐसा यहाँ पानी आएगा, या तो नीचे जाएगा, यहाँ से अंडरग्राउंड से नीचे जाएगा. दैट इज कॉल्ड शैलो होल्स. एंड वो शैलो होल्स थोड़ा और बड़ा होने से वी विल से इट एज डोलाइंस. तो डोलाइंस हो गया. डोलाइंस, द लाइन stone dissolved along the bedding plains which is formed due to water percolation. तो हम बोल दिया, वो इसमें से पानी अंदर घुसेगा, शाला होल से पानी अंदर घुसेगा, तो क्या होगा? थ्रू मटेरियल्स, थ्रू क्रैक्स, जॉइंट्स, वो नीचे का उसके आ जाएगा, तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग नैरो गैप्स एंड दे आर कॉल्ड केव्स. अभी एक तो सिंक होल हो गया था, ऐसा होल हो गया था, तो हॉल से ये तो पानी नीचे आना शुरू किया, एंड यहाँ पे जो जितना भी एरिया है, दैट इज जितना भी एरिया है, वो लाइमस्टोन का जो भी एरिया है, दैट हैज बीन टेकन बाय द ग्राउंड वाटर. वो डिसोल्व करके, वो लाइमस्टोन को डिसोल्व करके लेके जाएगा, एंड देयर क्रिएट ए बिगर होल. ऐसा अंदर एक तो बिगर होल बन जाएगा, एंड दैट इज नोन एज ए केव. सिंक होल कन्वर्ट करके थोड़ा और बड़ा होने से शैलो होल गया, देन डोलाइंस हो गया, डोलाइंस भी बड़ा होकर दैट हैज बीन चेंज टू केव बन गया. तो व्हाट इज पोनोरस? पोनोरस ऐसा है, अभी सिंक होल है और शैलो होल है, ये तो इसका तो ये कनेक्टिंग लाइन, दीज आर केव्स. एक्चुअली नीचे का जो केव एरिया है, इसको तो कनेक्ट करने के लिए एक तो लाइन हो जाएगा, line है, that we will say it as ponorous. The vertical pipe like chambers or passages that connect the cave and the shallow holes are called pond. एक सिंक होल है, वो बड़ा होने से shallow hole हो गया है, shallow hole, और नीचे हम बोल दिया है, तो पानी इसमें घुसकर यहाँ का जो एरिया है उसको तो पूरा इरोड करके जाएगा. that has been converted to caves बन जाएगा. वो केव और ये शैलो होल का बीच में जो वर्टिकल पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर है, दैट विल बी सेड एज पोनोर और पोनोरस. सो ये भी कनेक्ट कर दिया. एंड देन द उवल्लास. So what is this uvallas? They are long trenches, also termed as valley sinks. Several sinkholes and dolines may combine as a result, subsidence to form a large depression. तो पहले सिंक छोटा सा होल हो गया, वो बड़ा हो गया, शैलो होल हो गया, और फिर बड़ा हो गया तो डोलाइंस हो गया. इधर से पानी नीचे जा रहा है,
दैट इज पोरोनस। तो नीचे केव है, ऐसा एक तो केव हो गया, दिस इज केव, दिस इज पोरोनस एंड दिस आर सिंक होल, शाला होल्स एंड डोलेन्स। ये जो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया देन ये तो कोलेड होगा, कोलेड होके नीचे गिरेगा और देयर विल बी लार्ज डिप्रेशन, ऐसे एक तो लार्ज डिप्रेशन बन जाएगा एंड दैट लार्ज डिप्रेशन वी विल से इट एज ओवरलैप्स। सो सिंक होल, शैलो होल, डोलेन्स, ओवरलैप्स आर ऑल डिप्रेशन। ये सब डिप्रेशन है लेकिन बेस्ड ऑन दिस साइड इज वेरीज। तो ओवरलैप्स इट इज अ को क्या हो गया ओवरलैप्स, अभी फिर कोलेड होगा, सोचो इट इज अ वेरी लार्ज डिप्रेशन इन द कास्ट रीजन। These structures are formed by merging of several overlaps. तो overlaps फिर कनेक्ट, बहुत ज्यादा overlaps एक साथ हो गया। तो पहले एक छोटा सा था सिंक होल था, द शैलो होल हो गया है, डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ गया और बहुत ज्यादा शैलो होल बन मिक्स करके डोलेन्स हो गया, डोलेन्स बहुत ज्यादा डोलेन्स बन के ओवरलैप्स बन गया। ओवरलैप्स ज्यादा होने से ये पोलिच, पोलिच इसे बोलेगा पोलिच, पोलिच बन गया है। सो वी कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन, ऑल दीज आर डिप्रेशंस। So these are the major depositional landforms in the karst region. तो you can connect it very simply, अभी याद भी रख सकता है, सिंक होल, शैलो होल, डोलेन्स ये सब डिप्रेशन है। तो डोलेन्स के ये दोनों के नीचे कनेक्शन में आएगा केव्स आएगा, केव्स को कनेक्ट करने के लिए पोरोनस है। तो ये सब ये डिप्रेशन बहुत ज्यादा डोलेन्स कनेक्ट करके और उसका तो और ज्यादा बड़ा डिप्रेशन बन जाने से we will say it as overlaps, then overlaps और ज्यादा बड़ा होने से पोलिजे डोल्फिया। Then we can go to the another groundwater formation of landforms, that is depositional process। through depositional process से कौन सी वाला अंडरग्राउंड वाटर का लैंडफॉर्म बना रहा है, that we can discuss। एंड इसमें मेनली आएगा स्टैलेक्टाइट, stalagmite and the pillars, cave pillars. So what is stalactite? A stalactite is a hangs, actually it's a hangs like an isis, ऐसा एक तो isil means ऐसा स्पाइक जैसा फॉर्मेशन है ना, तो इसे बोलते हैं। तो इट विल हैंग, ऐसा हैंग करेगा, कहाँ पे हैंग करेगा, सीलिंग और sides of a caravan or cave. Caravan means cavern means cave, actually cave में ऐसा वाला formation, sharp formations. So this we will say it as stalactite। ये तो उल्टा नहीं बन होनी चाहिए, stalactites and stalagmites are there। तो ये ऊपर से जो नीचे ऐसे आ रहे हैं that is called stalactite। ये याद रखो, C and ceiling, सीलिंग एंड सी, ये तो कनेक्ट करने से यू कैन इजिली अंडरस्टैंड स्टैलेक्टाइट फ्रॉम सीलिंग, सीलिंग से स्टैलेक्टाइट आएगा ऊपर से नीचे। एंड ये न्यूमरस नीडल शेप्ड, इसका तो छोटा ऐसा ऐसा यू कैन सी स्मॉल नीडल जैसा एक तो फॉर्मेशन है, न्यूमरस नीडल शेप्ड ड्रिप स्टोन्स हैंगिंग फ्रॉम द केव्स, सीलिंग्स आर कॉल्ड ड्रेप्स और द कर्टेन्स। ये भी याद रखना है, ग्रेप्स ड्रेप्स, तो ड्रेप्स और कर्टेन्स बोलेगा। या स्टैलेक्टाइट का छोटा जस्ट लाइक नीडल स्टोन का एक फॉर्मेशन है, ड्रिप स्टोन्स जैसा फॉर्मेशन है, दैट वी विल से इट। स्टैलेक्टाइट्स आर एक्चुअली बिगर वंस, ऐसा बिगर है, लेकिन यहाँ आप देखने से यू कैन सी स्मॉल स्मॉल ऐसा है। सो दीज आर कॉल्ड ड्रेप्स और द कर्टेन्स। एंड नेक्स्ट कम्स द स्टैलेग्माइट। So stalagmite appears like an inverted stalactite rising from the floor of a cavern। तो caves में वो नीचे से ऊपर ऐसा एक तो फॉर्मेशन उल्टा, that is called stalagmite। stalactite का C ceiling, from the ceiling it will come stalactite, and नीचे से जो
बॉटम से जो कनेक्ट कर रहे हैं दैट इज स्टैलेग्माइट, ऊपर से देख रहे हैं दैट इज स्टैलेगाइट। दैट इज द डिफरेंस। ऊपर एक तो ऊपर से है, दूसरा नीचे से है। स्टैलेग्माइट appears like an inverted stalactite rising from the floor of a cavern. Then the pillar formation that runs from the cave ceiling to cave floor। यह तो ऐसा हो गया, पहले एक स्टैलेगाइट था, स्टैलेग्माइट था, ये बड़ा होकर ऐसा बड़ा होकर लास्ट में क्या हो गया, एक कनेक्ट हो गया, ऐसे एक तो कनेक्ट हो गया, स्टैलेगाइट एंड स्टैलेग्माइट कनेक्ट हो गया। Then it will appears like a pillar, just like a pillar. So these are called cave pillar or calcite pillar बोलेगा इसे। ऐसे if you look here you can see this was earlier it was stalactite and this was stalagmite, and ये तो बाद में connect हो गया and it form a single structure from here to here। You can see a single structure in the form of pillar। Another one is कास्ट लेक। सो क्या है, ऐसा अभी पानी हम बोल दिया है जो ऊपर से आ रहा है, अभी ये सिंक होल में तो सिंक हो जाएगा पानी, नहीं तो बड़ा होने से उधर से पानी नीचे गिरेगा। तो ये केव में इट इज बीन फिल्ड बाय वाटर एंड दिस वी विल से इट एज कास्ट लेक। कास्ट लेक्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोलैप्स ऑफ सबटेरेनियन केव्स। केव्स का तो ऊपर का वो कोलाइड हो गया है, केव का ऊपर वाला जो पोर्शन कोलाइड हो गया है, उधर से पानी नीचे आएगा एंड इट विल क्रिएट ए लेक इनसाइड एंड दैट वी विल से इट एज कास्ट लेक। स्पेशली वाटर सोल्युबल वाटर से होता है। एंड अनदर नेम इज तुफा। तुफा इज ए variety of limestone formed when carbonate minerals precipitate out of ambient temperature। अभी इसमें ज्यादा, ये तो ओपन हो गया, इसमें ज्यादा टेम्परेचर होने से यहाँ से कार्बोनेट मिनरल इवापोरेट होके इस केव के जो ऊपर पोर्शन है इसमें स्टिक हो जाएगा एंड उसी पोर्शन, ये जो डिफरेंट कलर का, इफ यू कैन लिख दिस कार्बोनेट मिनरल का एक डिपोजिशन है, दैट वी विल कॉल इट एज तुफा। तो इसमें these are the major depositional features। तो stalactite, stalagmite, cave pillar, then cast lake and finally tufa। ये सब याद रखें। तुफा तो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जो नीचे दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी नाम याद रखना है। हमको पता नहीं होगा ये कहाँ, ये लोग कहाँ से पूछेगा। तो यू हाउ टू फेमिलराइज विद दीज टर्म्स। तुफा ये तो क्या है, कार्बोनेट मिनरल का एक डिपोजिशन ऊपर में जो डिपोजिट करेगा, हैंग करके ये तो डिपोजिट करेगा, तो दैट वी विल से इट एज तुफा। एंड यहाँ ये भी याद रखना है, ड्रेप्स एंड कर्टन्स क्या है, जैसे नीडल लाइक स्मॉल ड्रिप स्टोन का एक तो फॉर्मेशन है, दैट वी विल से इट एज ड्रेप्स और कर्टन्स। So these are the major landforms created in the coastal areas and the karst regions। Okay, इसमें कुछ डाउट है आपको? नो सर। ओके, ये पूरा है ना, ये पूरा नाम याद रखना है, नहीं ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में है ना, पूछ सकता है। Okay, तो ये पिक्चर भी आपके माइंड में होनी चाहिए। पिक्चर से ज्यादा देखो डेफिनेशन, तब तो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा ये लैंडफॉर्म है। जी। ओके, देन वी कैन स्टॉप फॉर द डे। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।